let us discuss about the next concept, which is called integration by parts. Now here suppose we have integral of fx into gx dx. So this is the type of questions that we will be able to solve by this concept. Now here we have two functions and their product, and we want to integrate it. For example, say we have a question integral of x into sine x dx. So clearly we can see that the first function is x, which is an algebraic function that is denoted by f of x, and the second function is sin x, let us denote it by g of x. तो इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये अभी हम इस फॉर्मूला से सीखेंगे. So let us say, for the sake of simplification, fx को we denote by u and gx को denote by v, and the formula of integral of u into v dx is given by u into integral of v dx minus integral of du by dx into integral of v dx और इस पूरे प्रोडक्ट का इंटीग्रल, like this. So this is the formula which we call as integration by parts. Now देखो इसमें ना जो दो फंक्शंस है ना, how do we select? तो if you look carefully, v वाले फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं. So basically the choice of function is such that जो v फंक्शन होता है ना, that should be a function which is easy to integrate. कभी भी अगर हमको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम उसमें एक पार्ट ऐसा कंसिडर कर लेंगे जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड उसको हम लोग v कह लेंगे. नाउ इन ऑर्डर टू हैव ईज ऑफ सॉल्विंग, या फिर इजी वे में अगर हमको सॉल्व करना है, तो वी कंसिडर u एज द फर्स्ट फंक्शन एंड v एज द सेकेंड फंक्शन, एंड हम इनको सेलेक्ट करने के लिए एक थंब रूल डिसाइड किया हुआ है, and that is given by I late. So this is how we select the first function. जो पहले आता है that becomes the first function, और उसके बाद जो आता है that becomes the second function. Let us say in this example that we have एक algebraic function है और एक trigonometric function है. तो इस sequence में पहले a आता है, a stands for algebraic. तो let me just expand this. I stands for inverse trigonometric functions, L stands for logarithmic functions, A stands for algebraic functions, T stands for trigonometric functions, and E stands for exponential functions. So this is the order of selection. तो यहाँ पे x is algebraic, तो x will become our first function. That is, it is taken as u. और trigonometric function we consider as second function that we denote by v. तो हम देखेंगे आगे चल के कि इसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं. Now let us try to understand how this formula is derived. So let us try to prove this formula of integration by parts. तो अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं f of x into g of x, और इनको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं d by dx of this function. तो what do we get? We get f dash of x into gx plus fx into g dash of x. So let us take the first term on the left hand side. So what do we get? We get fx into g dash of x is equal to d by dx of fx into gx minus f dash of x into gx. और अब हम क्या करने वाले ना, इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं दोनों तरफ. तो इंटीग्रेट करेंगे हम इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स dx is equal to integral of d of
fx into gx minus integral of f dash of x into gx dx. अब जरा ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज इंटीग्रल ऑफ सम डिफरेंशियल एलिमेंट and integration and differentiation are reverse process of each other. So ये बन जाएगा हमारे पास fx into gx minus integral of f dash of x into gx dx. So this is the proof. Now if we want to put this into the final format, let us say कि हम fx को u से डिनोट करेंगे और g dash x को v से डिनोट करेंगे. तो ये फॉर्मेट मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, ये है हमारा एफ एक्स इंटू जी एक्स. तो एफ एक्स हमने u ले रखा था, सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली u इंटू जी डैश एक्स जो है वो v था. तो अगर हमको gx चाहिए तो वी विल हैव टू इंटीग्रेट g डैश. तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल f डैश ऑफ x, मतलब fx अगर u है तो f डैश विल बी u डैश. सो दिस इज u डैश इंटू gx हमने ऑलरेडी लिखा था, इंटीग्रल ऑफ v dx, एंड दैट माय डियर स्टूडेंट्स इज द प्रूफ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, और वी कैन से द फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो अभी आपको समझ आया होगा कि हाउ डू वी इंटीग्रेट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. Now the choice of functions as 1 and 2 depends on the fact that which one comes first in this list. जो पहला फंक्शन आएगा वो हमारा फंक्शन u बन जाएगा, और जो दूसरा फंक्शन आएगा वो फंक्शन v बन जाएगा. Now let us try to solve this type of question. तो हमारे पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. So the example that we have is integral of x into cos x dx. तो again पहला फंक्शन है हमारा algebraic, and algebraic comes first, so this becomes our function u, that is the first function, and cos x is basically the second function. It is trigonometric function, और इसको हम लोग v फंक्शन ले लेते हैं. तो सबसे पहले हम हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं. सो द फॉर्मूला इज इंटीग्रल ऑफ u डॉट v dx इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx एंड dx. तो आपको भी इस तरह से जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की आदत डालनी है, एंड देन इट बिकम्स वेरी इजी. तो अगर हम इसको अप्लाई कर दे फॉर्मूला, सो वी कैन राइट u इज बेसिकली x, cos x का इंटीग्रल इज माय डियर स्टूडेंट sin x, माइनस u डैश x का डेरिवेटिव इज 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x, एंड देन वी हैव dx. तो अगर हम इस sin x को भी इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ sin x इज माइनस cos x, तो ये हो जाएगा x sin x, माइनस ऑफ माइनस cos इज प्लस cos x प्लस c, एंड दैट माय डियर स्टूडेंट्स इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम फंक्शंस का सिलेक्शन किस तरह से करते हैं. There is one more point that I would like to add. Instead of taking the functions in the form isolate, we can also choose it in the form, we can also do the selection in the form of liate. It does not affect much. So basically इस sequence हमको क्या पता चलता है is that logarithmic and inverse functions are actually not so easily integrable. So उनको हम कभी first function की जगह पे नहीं सेलेक्ट करते हैं. सो दैट इज ऑल दैट वी हैव माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो. आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे. गो थ्रू द वीडियो, रिवाइज एंड सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो दैट इज ऑल दैट वी हैव इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स.